morning, students. I hope you all have enjoyed the Dussehra festival. Students, we have discussed about religious festivals in previous video. Today, we will discuss a new topic as usual. So, can you guess today's topic? Children, in previous chapter, we have discussed about plants around us and we have also learned that we should never cut trees. Students, अब इस ट्रीज के ना कट करने पे मुझे एक बात याद आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ एंड वो ये है कि कभी कभी हमें कुछ प्लांट्स को कट करना पड़ता है बिकॉज अगर हम उसे कट नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज एटसेट्रा. और पता है चिल्ड्रन, कुछ प्लांट्स को कट करने के बाद एज अ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक इसी प्लांट कटिंग के फेस्टिवल से रिलेटेड है. आई होप नाउ यू हैव गेस्ड व्हाट इज टुडेज टॉपिक. व्हाट डू यू से? नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, आई विल टेल यू बिकॉज टुडेज टॉपिक इज वेरी न्यू फॉर यू. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल. दैट मीन्स व्हीट, राइस की फसल जब तैयार हो जाती है तो उसे हम कट कर देते हैं. इसी तरह से जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइप मीन्स पक के तैयार हो जाते हैं तब हम उसे तोड़ लेते हैं. एंड आपको पता है ना कि अगर हम उसे नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, तब वो खराब हो जाएंगे. एंड कुछ प्लांट्स को कट करने के बाद हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड इसी फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. ये हार्वेस्ट फेस्टिवल को डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से सेलिब्रेट किया जाता है लाइक पोंगल, लोरी, Bihu, Onam, etc. We celebrate Makar Sankranti as khichdi in Uttar Pradesh. On this day, people make khichdi from rice, pulses and mixed vegetables, as well as children fly kites very happily. Now students, we are going to talk about Lori. The people of Punjab celebrate Lori festival. They celebrate Lori after cutting the rice crop. They light a holy bonfire. It is an important part of this festival. On this day, people dance on folk songs. Festive food include groundnut, sesame seeds, jaggery. पॉपकॉर्न तो आप सब लोग जानते ही होंगे, वो भी इस फेस्टिवल पे खाए जाते हैं. Now students, as you can see on the screen, groundnuts, revdi, popcorn, these all food items are written on Lori. They all sit together and wish each other happy Lori. और एक बात और बताऊं चिल्ड्रन, they sit unless the fire dies out. That means वो तब तक बैठे रहते हैं, तब तक डांस करते हैं जब तक कि फायर बुझ न जाए. You know students, लोरी के अलावा बैसाखी भी पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. Now students, we will talk about Pongal. Pongal is celebrated in Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu celebrate Pongal for 3 days. It is celebrated in the month of January. They worship rain god on the first day, Surya or sun god on the second day, and cow on the third day. They make rangoli on this occasion. On Pongal, a sweet dish is made from rice and jaggery. It is prepared and distributed among all. That means इस दिन राइस और जैगरी, जैगरी का मतलब गुड़, इससे बनी स्वीट डिश बनती है और वो बनने के बाद सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. एंड जब ये डिश प्रिपेयर हो जाती है तो इसी को हम पोंगल कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सप्लेनेशन आई होप you all are ready to check your knowledge. So let's check your knowledge through MCQs. Our first question is, on which harvest festival is cow worshipped? Options are Pongal, Onam or Lori. The correct answer is Pongal. Now our next question is, dash is harvest festival, Diwali, Eid or Lori? The correct answer is Lori. Now our next question is, the people of Tamil Nadu celebrate Baisakhi, Pongal or Lori? The correct answer is Pongal. Now our next question is, a sweet made from rice and dash is prepared on Pongal. Sugar, jaggery or coconut?
So to complete this blank, your answer is jaggery. Now students, after checking your knowledge, it's time to do an activity. Let's see and try to understand. Draw and color the rangoli in your notebook. That means what you have to do, आपको एक रंगोली ड्रॉ करना है as well as उसे कलर करना है. कहाँ पे? अपनी नोटबुक में. You can also take the help from this picture. That's it for today kids. I hope you have enjoyed this module a lot. Till then, stay happy, celebrate festivals. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.